Very good morning, my dear students. Welcome to Conceptum classes. Let me first remind you, if you are the first time viewer of this channel, please don't forget to subscribe it. Today, in this session, we will discuss first 5 questions of exercise 13.3. This is 10th class mathematics, surface area and volumes. First 5 questions of exercise 13.3. So 13.1 and 13.2 exercise we have already discussed. So let us discuss today first 5 questions of exercise 13.3. So let us start. The question number 1 says, a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder. So students, यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं. जब हम एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरे सॉलिड में रिकास्ट करते हैं, when we melt a solid and recast it into another solid, then the volumes of two solids, the solid that is melted and the solid that is made, their volumes are always equal. So here a sphere, we have a sphere. In this question we have a sphere of radius 4.2 centimeter. The radius of this sphere is 4.2 centimeter. This sphere is melted and drawn into a cylinder. इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर में बनाया गया है. A sphere is taken, it is melted and drawn into a cylinder of radius 6 centimeter. The radius of this cylinder is 6 centimeter and its height we have to find out. Let me suppose h is the height of the cylinder. Now first आप इस क्वेश्चन को समझिए. हमारे पास एक मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर. दिस स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ cylinder. The radius of the cylinder is 6 centimeter. We have to find its height. इसकी हाइट हमने निकालनी है. इसका यही मतलब हुआ, जो इसका वॉल्यूम है, इस स्फीयर का वॉल्यूम, वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा. सो लेट, मैं मानता हूं इसकी रेडियस r है. लेट r be the radius of the metallic sphere. Therefore we have r equal to 4.2 centimeter. चलो इसकी रेडियस में r1 मानता हूं. Let r1 be the radius of the cylinder and h be its height. Now the question says sphere is melted and drawn into cylinder. Sphere is melted and drawn into cylinder. इसका मतलब हुआ volume of sphere is equal to volume of cylinder. Therefore volume of sphere is equal to volume of cylinder. Volume of sphere का वॉल्यूम ये होता है 4/3 पाया r क्यूब, क्योंकि r हमने इसकी रेडियस रखी है तो r क्यूब is equal to volume of cylinder. It is पाया r1 square, because हमने r1 इसकी रेडियस रखी है, into h. तो यहाँ मुझे r1 जो दिया गया है वो है 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ क्या करूंगा मैं, ये पाई एंड पाई कैंसल्स, तो पाई और पाई कैंसल आउट हो जाएंगे. यहाँ बचे मुझे, इट इज 4/3 r क्यूब is equal to r1 square h, or 4/3 r cube. What is r? 4.2.
4.2. R cube means 4.2 into 4.2 into 4.2. 3 times multiply 4.2. R1 square. What is R1? 6. It is 6 into 6. H we have to find out. Height हमने निकालनी है. यहाँ मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करता हूँ. So it is 4 by 3 into 4.2 into 4.2. यानी इसका मतलब हुआ मैं 42 into 42 करूंगा तो वो मुझे आएगा 17.64. 17.64. 4.2 into 4.2 is 17.64. Multiplied by 4.2. 6 is the 36H. यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ. So it is 4 by 3. 17.64 into 4.2. 17 4 is 68. 64. It is 74.088 is equal to 36H. अगर कोई डाउट है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. 4.2 into 4.2 is 17.64 into 4.2 it is 74.088. You can check it. Now 4 ones are 4, 4 nines are 36. It means 74.088 divided by 3 is equal to 9H. क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 27H 74.088. तो H is equal to, यहां मैं निकालता हूं H. Therefore H is equal to 74.088 divided by 27. 27 twos are 54. So it will be something 2 point. Let me check it. Divided by 27. 27 twos are 54. 0 and 2.0. Then 7. 1, 10 minus 8, 2, 0, again 7. It is 2.77. 2.77 something. So it will be 2.77 centimeter. So height of this cylinder will be 2.77. I will repeat it. A sphere is given, sphere is melted and drawn into a cylinder. So you must remember, जब हम किसी सॉलिड को मेल्ट करके दूसरे सॉलिड में ड्रा करते हैं तब दोनों सॉलिड्स का वॉल्यूम इक्वल हो जाता है. So therefore volume of this sphere will be equal to volume of cylinder. So volume of sphere is volume of cylinder. Volume of cylinder is 4 by sphere is 4 by 3 pi r cube, and volume of cylinder is pi r square h. Pi and pi cancels. Then calculate. It will be equal to 2.77. Next question. Question number 2. You write it down. Let me move to next question. Question number 2. Now the second question is metallic spheres of radii 6, 8 and 10. Wo 3 metallic spheres are given. We have been given 3 metallic spheres. This is sphere 1. It has a radius of 6 centimeter. Let me name this as sphere 1. Its radius is R1. Another sphere. Let me name this as sphere 2. And its radius is 8 centimeter. Let me mark its radius as R2. And another sphere number 3, and its radius is 10 centimeter. Let me mark its radius as 3 centimeter. These three metallic spheres are melted and drawn into a bigger sphere.
बड़ा स्फीयर बनाया गया है, तो इसकी रेडियस क्या है वो बतानी है. We have to find its radius. Let me say its radius is r. So three metallic spheres are melted and drawn into a bigger sphere. We have to find its radius. इसका मतलब हुआ इन तीन स्फीयर्स का जो वॉल्यूम है वो इस चौथे स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा. So let r1, r2 and r3 be the radii of the three metallic spheres. We have r1 equal to 6 centimeter, r2 equal to 8 centimeter, and r3 equal to 10 centimeter. Now these three metallic spheres are melted and drawn into a bigger sphere, a resultant sphere. So let me suppose capital R is the radius of this resulting sphere. Let R be the radius of the resulting sphere. It means that volumes of these three spheres together will be equal to volume of the resulting sphere. It means volume of first sphere plus volume of second sphere plus volume of third sphere is equal to volume of resulting sphere. वॉल्यूम ऑफ दिस फर्स्ट स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, तीनों को ऐड करो वो इस स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फर्स्ट स्फीयर it will be 4 by 3 pi r1 cube plus 4 by 3 pi r2 cube plus 4 by 3 pi r3 cube is equal to volume of resulting sphere. It is 4 by 3 pi r cube. Here 4 by 3 pi, 4 by 3 pi, 4 by 3 pi, 4 by 3 pi. Take it common. So r 4 by 3 common. यहाँ बचा मुझे r1 cube plus r2 cube plus r3 cube is equal to 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 and 4 by 3 cancel out. Pi and pi cancel out. We have r1 cube plus r2 cube plus r3 cube equal to r cube. Now substitute the values. First you pause the video and note it down. Let me rub this part. Now r1 cube, r1 is 6 means 6 cube, r2 is 8 means 8 cube, r3 is 10 means 10 cube is equal to r cube. 6 cube, 6 into 6 into 6 is 216. 8 cube, 8 into 8 into 8 is 512. 10 cube, 10 into 10 into 10 is 1000 is equal to r cube. 1000 plus 512 plus 216, 1000, 15, 17, 1728 or 1728 is equal to r cube, or we can say that r is equal to cube root of 1728. Find the cube root of 1728. So r is equal to cube root of 1728. 12 into 12 into 12 means 12 whole cube. Cube and cube root cancels. R is equal to 12 centimeter. Therefore, radius of resulting sphere is 12 centimeter. Note it down. Let's move to question number 3.
Third question. Third question is, a 20-meter deep well with diameter 7 meter is dug. A cylindrical well is dug. एक वेल खोदा गया है, एक कुआं जो सिलेंड्रिकल शेप में है. इसका जो डाया है वो है 7 मीटर. और इसकी जो हाइट है, कुएं की जो हाइट है दैट इज 20 मीटर. इसकी हाइट है 20 मीटर और डाया इसका 7 मीटर है. द अर्थ विच इज डग आउट, यानी यहाँ जो मिट्टी खोद के निकाली गई है वो एक क्यूबाइडल प्लेटफॉर्म पर सेपरेट की गई है. एक क्यूबाइडल प्लेटफॉर्म पर सेपरेट की गई. यहाँ से जो मिट्टी निकली वो इस पर सेपरेट की गई, तो इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. हमें बताना है इसकी हाइट कितनी इंक्रीज होगी. चलो मान लिया इसकी रेडियस r है और इसकी हाइट h है. इसकी लेंथ में l मानता हूँ, इसकी ब्रेड्थ में मानता हूँ b, ब्रेड्थ में b मानता हूँ. एंड चलो मान लिया इसकी हाइट है h, तो इसकी हाइट में h1 मानता हूँ यहाँ, तो इसकी हाइट में h मानता हूँ. सो लेट r be the radius and h be the height. Height here means depth. Height here means depth, or and h be the depth. और इसको हम height मानते हैं of the cylindrical well. Therefore, radius r, diameter 7 divided by 2 means 3.5 centimeter. Height h इसकी है 20 मीटर. Now, अब जब हमने इस कुएं को खोदा, यहां से जो मिट्टी निकली, तो वॉल्यूम ऑफ दैट अर्थ dug out from the well, it will be equal to volume of this cuboidal platform. The length of cuboidal platform is given to be 22 meter. Length is here 22 meter, and its height I think is 14 meter, and its breadth is 14 meter. Height we have to find out. Now, length of cuboidal platform it is 22 meter. इसकी जो breadth है, the breadth of this platform is given to be 14 meter. Height we have to find out. Height h1 we have to find out. Now, here the volume of earth dug out from the well will be equal to volume of cuboid is equal to volume of cuboidal platform now. Volume of earth dug out, since the well is in a cylindrical shape, यहाँ जो कुआं है वो cylindrical shape में है, तो जो अर्थ वहां से dug out होगी वो volume of the cylinder होगा. Volume of earth is same as the volume of cylindrical well, so therefore it is pi r square h is equal volume of cuboidal platform, it is length into breadth into height pi. I give the value of pi here, it is 22 by 7 into r. What is r? 3.5. It means 3.5 into 3.5 into h. What is h? 20 meter is equal to length, that is 22 meter, breadth, that is 14 meter, and height we have to find out.
So here, this 22 and this 22 cancels. It is 3.5 into 3.5 into 20. 3.5 into 3.5 into 20 means 7 ones are 7, 0.5. So it is 20 into 3.5 into 0.5. 3.5 into 0.5 means 1.75 into 20. 2, 5, 10, 2, 7, 14, 1, 15. It is 35. So it will be 35 is equal to 14H, or H is equal to 35 divided by 14. H is equal to 14 2s are 28. वहां से बचा 7. 7 बचा बना गया 7. 14 5s. It is 2.5 meter. So the height of this platform will be raised to 2.5 meters. 2.5 meters. Pause the video and note it down. Let's move to question number 4. Question number 4 says, a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. Again, a well is dug. And you know, a well is always in a cylindrical form. Well हमेशा किस फॉर्म में होता है? Cylindrical form. तो एक cylindrical well खोदा गया, उसका जो डाया है वो है 3 मीटर, और इसकी जो डेप्थ है यानी हाइट है that is 14 meter. That is 14 meter. A cylindrical well is dug out. The diameter of this well is 3 meter and its height, that means the depth, is 14 meter. अब जो मिट्टी यहाँ से खोद के निकाली गई, the earth which is dug out from here, उसको क्या किया गया? उसको ये जो माउथ ऑफ द वेल है इसके इर्द गिर्द, इसके राउंड में फैला दिया गया, ऐसे इसके राउंड में ऐसे फैलाया, यानी जो मिट्टी निकली, कुआं खोद के जो मिट्टी निकली, उस मिट्टी को क्या किया गया? ये जो माउथ ऑफ द वेल है इसके ऐसे राउंड में सेपरेट किया गया और एक एम्बैंकमेंट बनाया गया. क्या बनाया गया? एम्बैंकमेंट. अब जो विड्थ है इस एम्बैंकमेंट की, वो इसने दी है 4 मीटर. क्या दी है? 4 मीटर. हमने बताना है ये जो हाइट है एम्बैंकमेंट की, इसकी हाइट क्या है? व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस एम्बैंकमेंट? यानी जब मिट्टी खोद के निकाली गई, वो इस वेल के जो वेल का जो माउथ है उसके आसपास ऐसे सेपरेट की गई, तो एक रिंग जैसा बना. क्या बना? एक रिंग जैसा, यानी 2 सर्कल्स बने. एक बना ये इनर सर्कल और बना ये आउटर सर्कल. तो बीच में जो रिंग बना उसकी हाइट कितनी इंक्रीज होगी, उसकी हाइट क्या होगी, वो हमने निकालनी है. तो देखिए आप क्वेश्चन क्या बोलता है. सो लेट R be the radius and H be the height. H be the depth. Depth here means height of the well. तो यहाँ रेडियस ऑफ द वेल है, डायमीटर है 3, तो रेडियस होगी 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 मीटर, और हाइट इसकी दी गई है 14 मीटर. ये रेडियस और ये हाइट है. नाउ जो अर्थ यहाँ से निकाली गई डग आउट करके, दैट इज सेपरेट अराउंड द माउथ ऑफ द वेल, forming a ring. Forming a ring. No, the earth dug out is separate
around the mouth of the well, forming a ring, forming an embankment or a ring और रिंग। तो इस रिंग की जो ये इस एम्बैंकमेंट की जो विड्थ है दैट इज 4 मीटर ऑफ विड्थ, 4 मीटर ऑफ विड्थ 4 मीटर। अब यहाँ पर सवाल है, यहाँ पर भैया दो सर्कल बने, एक बना ये माउथ ऑफ द सर्कल, माउथ ऑफ द वेल, ये इनर सर्कल बना, और ये जो एम्बैंकमेंट बना, ये जो मिट्टी सेपरेट हो गई उससे एक और सर्कल बना, ये बना आउटर सर्कल, तो एक रिंग जैसा बना। तो अब जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ यहां से निकला वो इस वॉल्यूम ऑफ रिंग के बराबर होगा, इस एरिया ऑफ रिंग के बराबर होगा इनटू हाइट। नाउ वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट is equal to area of ring into height of the embankment into height। चलो मान लिया मैं इस इनर रेडियस जो है वो मैं R1 मानता हूं, और जो आउटर रेडियस है इसको मैं R2 मानता हूं। अब जो R1 है वो है रेडियस ऑफ द माउथ ऑफ द वेल दैट इज 3/2 मीटर, और ये जो आउटर है रेडियस ऑफ आउटर रिंग, एक तो ये R1 और प्लस 4, इट इज 3/2 प्लस 4, इट इज 11/2 मीटर। यानी यहाँ जो रिंग बना, रिंग में दो सर्कल्स बने, इनर सर्कल की रेडियस R1 है, वो ऑलरेडी हमें पता है वो 3/2 मीटर है, और ये जो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस होगी, एक तो ये R1 और जो 4 मीटर विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट है वो 4 मीटर ऐड हो गए हैं तो 11/2, तो यहाँ मुझे दो रेडियस मिल गई। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, क्योंकि वो सिलेंडर वेल है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, हो गया पाई r स्क्वायर h इज इक्वल एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग होता है एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। एरिया ऑफ आउटर सर्कल पाया r2 स्क्वायर माइनस पाया r1 स्क्वायर इनटू हाइट इनटू h1। चलो मान लिया ये जो हाइट है मुझे वो h1 है, वो मुझे निकालनी है। तो पाया r is 3/2 whole square into h is 14 is equal, take pi common here, it is r2 square minus r1 square into h1, pi and pi cancels, 3/2 whole square means 9/4 into 14, r2, what is r2 now, it is 11/2, it is 11/2 whole square minus r1, it is 3/2 whole square into h, into h। यहाँ मैं करता हूँ, so it will be 2 2s are 4, 2 7s are 14, 7 9s are 63, it will be 63/2 is equal to 11/2 whole square, 11/2 whole square means 121/4, 11 whole square 121/4 minus 9/4 into h, और 63/2 is equal to, यहाँ 4 आएगा एलसीएम, so it will be 121 minus 9 into h, so 63/2 is equal to 121 minus 9, 11 minus 9 2, so 112 over 4 into h, it is 112 into 4 into h। First pause the video, note it down, let me do it here now। So it is 63/2
is equal to 112 by 4 into h. 2 ones are 2, 2 twos are 4. 7 nines are 63. It is 7 ones are 7, 7 6 is a 42. It is 2 ones are 2, 2 eights are 16. It is 9 is equal to 8h, or h is equal to 9 divided by 8. H is equal to 1.9 divided by 8. 8 ones are 8. 1.0182. Twos are 64. It is 1.125 meters. So height of the embankment is 1.125 meters. Height of the embankment is 1.125 meters. This is question number 4. Note it down. Let's move to question number 5. Fifth question. Shabash. A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter. A cylindrical container is given. A container is given in the shape of a cylinder. Diameter of this container is 12 centimeter and its height is, I think, 15 centimeter. Diameter is 12 centimeter and height is 15 centimeter. Is full of ice cream. इस कंटेनर में आइसक्रीम है. क्या है? आइसक्रीम. इसके अंदर आइसक्रीम भरी है. आइसक्रीम. शाबाश. अब क्या हुआ है? The ice cream is to be filled in cones of height 12 centimeter. अब यहाँ जो आइसक्रीम है उसको भर दिया गया है कोन्स के अंदर. इसके अंदर कोन के अंदर. The height of this cone is 12 centimeter. Height of the cone is 12 centimeter and diameter 6 centimeter. और कोन का जो diameter है वो 6 centimeter है. With a hemispherical shape at the top. और टॉप पर जब आइसक्रीम भरी है तो टॉप में इस आइसक्रीम को एक हेमिस्फेरिकल शेप दी गई है. ऐसे क्या दी गई है? ऐसे दी गई एक हेमिस्फेरिकल शेप. यानी इस शेप में ये आइसक्रीम कोन भर गया है. तो बताइए, हमने फाइंड आउट करना है कितने कोन्स ऑफ आइसक्रीम निकलेंगे इस सिलेंडर में से. इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इजी क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे. फिर आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम निकालेंगे along with this hemispherical top. इसका वॉल्यूम. फिर इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा. So let R be the radius and H be the height of the cylindrical container full of ice cream. So therefore here R is equal to radius. Since we have been given diameter, यहाँ diameter दिया गया है 12 centimeter, तो radius हो गया diameter divided by 2, that means 6 centimeter. और इसकी height h वो है 15 centimeter. चलो अब इसकी बात करते हैं. चलो मान लिया इसकी मैंने रेडियस r1 मानी और इसकी हाइट मैंने h1 मानी. Let r1 be the radius of the cone and h1 be its height.
R1 क्या है, मुझे इसका जो डाया है वो 6 सेंटीमीटर है, तो R1 मेरे पास हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट H1 है वो 12 सेंटीमीटर है, और H1 हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। चलो मान लिया, जब हम आइसक्रीम निकालते गए, कोन्स में भरते गए, चलो लेट अस सपोज दैट n number of cones are filled. How many cones? N number of cones are filled. Let n number of cones are filled with ice cream. It means that volume of this cylinder is equal to n times volume of cone, नीचे cone है, ऊपर हेमिस्फीयर है, it's equal to volume of cone plus volume of hemispherical top, वॉल्यूम ऑफ कोन और ये हेमिस्फीयर टॉप वो ऐड होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो लगाइए फार्मूला, so volume of cylinder, it is pi r square h is equal to n times, चलो n में बाद में लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 pi r1 square h1, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 pi, क्योंकि r1 और h1 मैंने इसकी रेडियस और हाइट रखी है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 pi r1 cube into n, क्योंकि n कोन्स है, so it is pi r square h is equal to, यहां से मैं 1/3 pi कॉमन निकालता हूं, r1 भी कॉमन निकलेगा, r1 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 1/3 pi r1 स्क्वायर, क्योंकि कोन और इस हेमिस्फीयर की रेडियस सेम है, तो 1/3 pi r1 स्क्वायर में कॉमन निकालूंगा, यहाँ मुझे बचा h1 प्लस यहाँ जब निकाला कॉमन, यहाँ मुझे बचा ट्वाइस r1 इंटू n, अब ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, अब यहाँ दीजिए आप वैल्यू, r स्क्वायर, व्हाट इज r, 6 सेंटीमीटर, मीन 6 into 6 into h, what is h, that is 15 centimeter, is equal to, let me check whether it is 15 or 14, 15 is equal to 1/3 r1, what is r1, r1 here we have 3 centimeter, means r1 square means 3 into 3 into h1, h1 is 12 plus twice r1, it 2 times 3 into n, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 into 6 into 6, 15 6 is a 90, 96 is a 540 is equal, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 3 into 12 plus 6, 2 3 is 6 into n, so it is 540, it is 3 into 12 6 is a 12 plus 6 is 18 into n. First pause the video and note it down. So let me do it here now. So it is 540 is equal to 3 into 18, 54 into n, or we say n is equal to 54 divided by 540 divided by 54, 54 tens. So n is equal to 10. So 10 ice cream cones are filled. How many cones? 10 cones. So I hope you understand. तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस पूरा समझ आया होगा, तो ये इस एक्सरसाइज 13.3 के 5 क्वेश्चन हो गए, बाकी जो इसके क्वेश्चन रह गए that we will discuss in the next video. Till then, goodbye, have a nice day.